Okay, going live now. Hare Krishna. Dhanva Pranam Mataji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Bol. Hare. Right, so let me just share the presentation. It's in here. Hare Krishna. Welcome everyone. So what we are doing is Shri Īśopaniṣad, and we have done the invocation mantra. We have done introduction before that, then invocation mantra, then mantra 1, and today we will start mantra 2. Hopefully we will take 2 sessions for mantra 2, and then we will go further. So today we will introduce, and next week we will conclude mantra 2. And before we'll get further, let's take the blessings of our acharyas and do Mangalachan. Ajnana-timirandhasya Jnana-anjana-shalakaya Chakshur-anmilitam Tasmai Shri-Gurave Namah. Shri Chaitanya-Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Tam Sajiv Sadhvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Dev Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhavitam Saja Hey Krishna Karuna Sindhu Jagatpate Gopesha Gopika Radha Kanta Namaste Sapta Kanchana Gaurandi Radhe Vrindavaneshwari Krishnamurti Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyasya Krupasindhubhya eva ca Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami iti namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunvadi Pascharya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Gurudev Maharaj ki jai, Samaved Bhakta Vrinda ki jai. Jai Jai Shri Radha. Hare Krishna. Hare Krishna. Right. So सभी का स्वागत है. हम श्री ईशोपनिषद कर रहे हैं जो भक्ति शास्त्री का भी एक पाठ है. भक्ति शास्त्री के अंदर हम 4 पुस्तक करते हैं, जिसमें से श्रीमद् भगवद गीता, श्री ईशोपनिषद. तो भगवद गीता को हम पंच वेद भी मानते हैं, हम पुराण भी मानते हैं. भगवद गीता को हम वेदांत का सार भी मानते हैं, और उपनिषद में सबसे ऊपर श्री ईशोपनिषद, और फिर रूप गोस्वामी जी के 2 ग्रंथ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उपदेशामृत
और भक्ति रसामृत सिंधु। तो ये 4 मिलकर भक्ति शास्त्री का जो कोर्स है वो बनता है, जो करीबन 1 साल से ऊपर रहता है। डिपेंड करते हैं हम कहाँ से कौन सा ज्वाइन करते हैं। 1 साल से ऊपर ये भक्ति शास्त्री का कोर्स रहता है। उसके अंदर श्री ईशोपनिषद पढ़ाया जाता है। तो हम श्री ईशोपनिषद में देख रहे हैं। हमने पहले बैकग्राउंड देखा, हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने इन्वोकेशन मंत्र देखा, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्। अब हम आगे बढ़े, हमने मंत्र 1 देखा, आज हम मंत्र 2 देखेंगे। ऐसे 18 मंत्र श्री ईशोपनिषद में है। So what we have been covering so far, we have covered the background, the introduction, we have seen the mantra 1, and now we will see mantra 2. So the way they come together is mantra 1, 2, 3, so verses 1, 2, 3, they form together in one section of श्री ईशोपनिषद। तो पहले हम अगर इन्वोकेशन मंत्र को देखें, और जो पहले 3 मंत्र हैं 18 में से, वो एक सेक्शन बनाते हैं, और वो सेक्शन इस तरीके से जाता है। पहला हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्स के अंदर हमने देखा ईशावास्यम इदम शरणम। जो ईशावास्यम है, ईशावास्यम सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, और हमारे पास क्या है? हमारे पास सिर्फ हमारा कोटा है। तो माता जी ने बहुत अच्छे से ये समराइज किया कि जो चीज हमें प्रयत्न, हमें हार्डवर्क करते रहना चाहिए, अपना एफर्ट करते रहना चाहिए, अपना एंडेवर करते रहना चाहिए। हमको हमारे प्रयत्न से जो कुछ मिले, जो आराम से मिल जाए, वो हमें समझना चाहिए हमारा कोटे में है। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिल पाता, तो हमें समझना चाहिए वो हमारे कोटे में नहीं है। ये एक पर्सपेक्टिव और एक डेफिनेशन हो सकती है अगर हम समझना चाहें कोटा क्या है। क्योंकि ऑफिस के अंदर है, क्या आपको प्रमोशन के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस प्रमोशन के लिए इस तरीके से और इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अपना आध्यात्मिक जीवन भी बिल्कुल, जब माला कर रहे हैं उस टाइम ध्यान वही है, अरे प्रमोशन नहीं मिला, अरे प्रमोशन नहीं मिला, अरे प्रमोशन के लिए और काम करना नहीं। फिर अगर इस तरीके से आध्यात्म जीवन भी डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए हम अपने कोटे से बाहर की चीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई काम ना करें और हम बैठे रहें कि जो हमारे कोटे में हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा। काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि समय का इंतजार कर रहे होते हैं कि समय जब होगा, समय जब अच्छा होगा, अनुकूल होगा, जब हमारे नक्षत्र के अंदर सारे स्टार्स आएंगे, तब अपने आप ही हमारे कोटे में जो हमें चाहिए होगा वो आ जाएगा। ऐसा नहीं है, हमें मेहनत करनी है अपने कोटे के लिए, और जो भी हमारे लिए भगवान ने रखा है वो हमें तब जरूर मिलेगा हमारे कोटे में। हरे कृष्ण माता जी। यस प्लीज। Hare Krishna. Prabhuji, I think this is similar to, like what it says in the Bhagavad Gita, that you do your karma, but without attaching to the fruits of the results. So just do it. Doesn't mean that you don't do anything. You have to do an activity, but don't expect the results. Looks like similar to that. It's very similar to that, Mataji. Yes. And this is the way we will see that how Srila Prabhupada ji has given some of the purport, and somewhere we will see the Sanskrit verse is saying something, but in the English translation, Prabhupada ji has added something extra. And sometimes devotee says, why Srila Prabhupada ji, or from where he has added? He has added those extra bits because they are not given there, but they have been mentioned somewhere else. For example, Shri Īśopaniṣad. So from his wider perspective, wider knowledge, to make it clear, he added those bits there. But you're right. We will see again in Mantra 2, Mantra 3, some of the verses which are cross-referenced from Srimad Bhagavatam. So you're right, Mataji. The way it's been said there, that we have the choice to make our action. We can decide which actions we would like to make, either this way or that way. But the fruits of our actions, we don't have any control over that. And what we get in return is what belongs to our quota. So we only have the choice of doing our work. Hare Krishna. So
The very first verse says that we need to be detached. We should not feel that I'm the owner, that even if I got something from my own knowledge, my own hard work, still we need to understand the mental intelligence has been given by Krishna, the physical strength has been given by Krishna, and the way it's been explained in Srimad Bhagavatam that each and every body part in our body is controlled and is empowered by demigods, देवी देवता. तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, देवी देवता उसमें वास करते हैं और देवी देवता की वजह से वो सारे अंग चल रहे हैं. इसलिए हमको सिर्फ भगवान के ही प्रति नहीं, देवी देवताओं के प्रति भी कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो भी हम कर पा रहे हैं. तो हमें कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर कभी फॉल्स ईगो नहीं आएगा कि हमने अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया है. And then verse 2 is that not only that we need to detach from material world, or we can say Maya, the whatever is around which brings us to illusion, but the verse second which we are doing today is going to tell us that how we need to attach to Krishna. So first we detach, then second we attach. Now if we just detach, then it's very, very dry. It's like somebody will say, I will not speak to you. And then you will think, well, you will not speak to me. Are you going to speak to anyone else, or you're not going to speak to anyone? Now, if I will decide I will not speak to one of my friends, but I'm okay, I will speak to other friends, I'm good. But if I will say I will not speak to you, but that means I will not speak to anyone, now that's an impossible task. Sooner or later, I will have to talk, because it's impractical that rest of my life I will not talk to anyone. So if I will be detached, now my eyes will be detached, but if I will just keep detaching from things, it will be very hard for me. So it's good the way Srila Prabhupada ji explained. Now this is one difference between Ashtanga Yogi and Bhakti Yogi. Ashtanga Yogi will say, I don't want to get involved in everything is Maya. I will just go on top of the hill. I will just go in the cave. I will go in the jungle. I will just detach myself from the world. But Bhakti Yogi will say, I will bring everything. I will do what I need to do, but I will bring Krishna into those. I will watch for my eyes, but I will watch Krishna movies. I will listen to the music, but I will watch bhajans. I will eat, but I will cook at home, offer to Krishna, and then I will eat that as prasad. So everything will be there, but now Krishna is there in the center. So that's how we attach to Krishna. So not only that we will detach from the material world, we will start attaching to things related to Krishna. And we will see gradually everything will be spiritualized, right? The same person in the office, same person in the home, same person in the parties, but the person is not attached to material world, attached to Krishna. And the third one we will see, if we are not situated like that, which number of people are, then what happens? So this is mantra 3. So that's how it's going to go in the phase, in the graduation. So सबसे पहले हम देखेंगे हमको किस तरीके से डिटैच होना है मटेरियल वर्ल्ड से. हमने देखा क्योंकि सब कुछ ईशावास्यम है, हमको अपने कोटे से बाहर के किसी भी चीज से डिटैच होने की जरूरत है, अटैच होने की जरूरत नहीं है. लेकिन इतना ही नहीं, हमको भगवान से अटैच होने की जरूरत है. ठीक, अपने कोटे के अंदर रह के हमको भगवान की भक्ति करने की जरूरत है. और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वर्स 3 में हमें पता लगेगा कि क्या होगा अगर हम भगवान से अटैच नहीं होंगे और अगर हम अपने कोटे से बाहर की इच्छा करेंगे. और हम देख पाएंगे कि शायद यही रीजन है जिसकी वजह से हम इतने फुल ऑफ एंजाइटी होते हैं कि हमको इतनी दिक्कत होती है हर चीज की. लेकिन भक्त को जितना मिलता है, भक्त अपने कोटे के अंदर खुश रहता है. Right? But that doesn't mean that the bhakt will stop working hard. Bhakt will work very hard, but bhakt will be happy, devotee will be happy with his or her own quota. Hare Krishna. So that's the gradual movement. Now, very briefly, what we saw in mantra 1, the connection between invocation and mantra 1. So this is just to recap. Krishna is complete whole
This is what we say, Om Purnamada Purnamidam. So naturally, he's also the proprietor. So Krishna is the only one who is complete, and he's the proprietor, he's the owner. Also, conditioned souls are complete, which is us. We are Jivatma, we are the living entity. So we are part and parcel. So Krishna says in Bhagavad Gita, Jivamsu. So we are Amsha. We are the part and parcel of Krishna. So we are also complete, but we are spiritually complete, right? Now, this verse explains how they can realize their completeness by recognizing Lord's proprietorship. Now, what we understood there, that if we understand everything belongs to Krishna, we will understand we are also complete. Now, people say a lot of time that how are we complete? How this material world is complete? If you think about it, things are going wrong everywhere, but then we need to understand that this is a place where things will go wrong, right? For example, in the prison, if people are there in the prison, prisoners are there in the prison, and they will say, well, this is not a good place to be. Well, good or bad is a different definition, but this is a prison, and this is the rule. These are the rules in the prison, that people cannot move freely, people are limited, people will only eat what's been given. So in its own sense, prison is perfect, because prison follows the rules and regulations made for prison. Prison is for those people who are not fit for the society, and that's the reason they are in the prison. So they cannot complain that, oh, in prison we don't have freedom, because in the prison we don't supposed to have freedom. Similarly, if we take for the example of hospital, in the hospital, people will say, oh, this hospital is very nice, this hospital is perfect. But if you will go there in that hospital, you will see people crying all over the place, maybe because they are in pain, maybe somebody is gone inside the operation, the relatives are crying outside, but still there it's supposed to be the treatment of those who are diseased, right? In that sense, the hospital is perfect because it's going to fix all or most of the diseases. Not all the diseases will be fixed, but one of the best hospitals you will pick in the industry, in the society, we will see that hospital is good because it fixes. Not that people are happy there, but people get the solution. It's fit for its purpose. And that's the reason hospital is complete as well. The prison is complete, the hospital is complete. Similarly, if we think about material world, in material world, what's happening is supposed to happen in material world. Material world is called dukhalya. So dukha, the sorrowness, the unhappiness will always be here. And in that sense, material world is also complete. There is nothing incomplete about it. However, whether we are supposed to be here or not is a different question. Whether prison is there, prisoner is supposed to be there in the prison. Whether somebody who is diseased, somebody who is obese is supposed to be there or not. Maybe he or she would have taken better care of his or her health. So if you think that way, we can understand everything is complete, fit for its purpose. तो जिस तरीके से हमने देखा, हम ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण कंप्लीट हैं, हम जीवात्माएं हम भी कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि इस भौतिक जगत के अंदर, मटेरियल वर्ल्ड के अंदर बहुत दिक्कत है. तो वो इस तरीके से हम समझ सकते हैं जिस तरीके से एक जेल होती है, जेल के अंदर बहुत सारे कैदी होते हैं, तो वो कैदी हो सकता है वहां पे जाके ये कहें कि ये कैसी जेल है, यहाँ पे तो हमको जाने नहीं देते, घूमने नहीं देते, हमारे मनपसंद का खाना नहीं है, हम जब टीवी देखना चाहें तब टीवी नहीं देख सकते. लेकिन वो जेल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर आप ऐसे हैं कि आप बाहर नहीं रह सकते, आपको जेल में ही आके रहना पड़ेगा. और कोई वहां पे ये भी नहीं कह सकता कि हम तो जेल में नहीं आना चाहते थे, क्योंकि हमने कर्म ऐसे करे हैं जिसकी वजह से हम जेल के अंदर आए. हमारे पास चॉइस थी जब हम जेल से बाहर थे कि हम ऐसे कर्म करें कि हम जेल से बाहर रहें, लेकिन हमारे कर्म की वजह से हम जेल में आए हैं. हम ना ही पुलिस वाले को जिसने हमको पकड़ा उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जिस जज ने हमको सेंटेंस दिया कि हमको इतने साल जेल में रहना है, ना ही हम उनको ठहरा सकते हैं. अब हम जेल के अंदर आ गए हैं और वहां पे जो जेलर्स हैं, वहां पे जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम उनको भी जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि वो हमको चीजें नहीं करने देते यहाँ पे, क्योंकि अब हम जेल के अंदर हैं तो हमको जेल के रूल्स एंड रेगुलेशंस ही अपनाने पड़ेंगे.
और उन जेल्स के रूल्स के अकॉर्डिंगली जेल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जेल में वो चीजें अलाउ नहीं है तो हम वहां वो चीजें नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर हम सोचें तो हम हॉस्पिटल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी हमारे पास चॉइस है, हम अपने शरीर को ठीक रखें। अगर हमारी लाइफ चॉइसेस गलत हैं, हमने ज्यादा खाना खाया, हम ओबीस हो गए हैं, शुगर हो गई है, कई बार हम कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन वो भी हमारे पिछले कर्मों की वजह से ही होती हैं। तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर अब हम एक बार हॉस्पिटल चले गए और वहां पर जाकर हम डॉक्टर ये कहें कि नहीं, हमको ब्लड नहीं चढ़ाना, ब्लड नहीं चेंज करना, ब्लड नहीं देना, या हमको ये सिरिंज अपने बॉडी के अंदर नहीं लगानी, या हमको इस चीज की दिक्कत नहीं चाहिए, हमको लेटना नहीं है, हमको जाना है, हम यहाँ नहीं रुक सकते, या हमको ऑपरेशन नहीं कराना, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे पास तब कंट्रोल था, हमारे पास तब चॉइस थी जब हम बाहर थे। एक बार हम हॉस्पिटल में आ गए तो अब हमको हॉस्पिटल के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। और उस टर्म्स में हॉस्पिटल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल उन लोगों के लिए बना है जो लोग बीमार हैं, और उन लोगों को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, और हॉस्पिटल पूर्ण है। इसी तरीके से भगवान कृष्ण पूर्ण है, भगवान कृष्ण से हम निकले हैं, हम जीवात्मा भी पूर्ण है, और जो मटेरियल वर्ल्ड बनाया है वो भी पूर्ण है। So in that respect, we can understand how everything is whole, complete, fit for its own purpose. Right. So हम हिंदी में कहते हैं दुखालय, कि जैसे विद्यालय होता है जहाँ विद्या मिलती है, घुसलान्य, घुसालय, घुसल खालय, ऐसे ही हमारा दुखालय होता है जहाँ पे दुख मिलते हैं। तो हमारे ग्रंथों में पृथ्वी को दुखालय ही कहा गया है, तो दुख यहाँ पे मिलते ही रहेंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अगर कुछ किया जा सकता है तो जो मंत्र 1 से मंत्र 2 की तरफ हम चलते हैं, तब हमें ये बताया जाता है कि हम जब जो भी काम करेंगे उसके अंदर भगवान को लेकर आएंगे, तब हमारे ये दुख जा सकते हैं। और फिर सिर्फ इसी जीवन में नहीं, आगे आने वाले जीवन के लिए भी, लेकिन इस जीवन में अभी के अभी हमको परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। So mantra 2 is what it says, describe the necessity and the results of acting in God-centered consciousness. So ISKCON is International Society of Krishna Consciousness. So whatever we are doing, if we are Krishna conscious, we are always conscious of Krishna while doing anything. We are earning money, we are conscious Krishna has given this money to us, right? That's one thing. Krishna has given this to us. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Krishna has given this to us. And if we think about it, whatever the money we will get, how we can use this money for our own maintenance, so we can progress further in Krishna consciousness. And also if we have some surplus, then how we can utilize that in Krishna consciousness as well. So what we got, we will say thank you to Krishna. Krishna, you have given us such an intelligence that I can earn 100,000 pounds or £1,000,000. I have that money. Now, whatever I need to use for myself, I will use my necessity. And then going forward, whatever is surplus, how can I use for Guru and Gauranga? I can do book distribution. I can organize many other things in the temple, or I can just give the donation in the temple. So there are many, many avenues how we can utilize that surplus money. So this is what it says in mantra 2. So the mantra 1 says everything belongs to Krishna, Īśopaniṣad principle. And mantra 2 says that how we need to bring Krishna into our center of everything we do, our life. Now, so इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मंत्रा 1 में हम समझते हैं ईशावास्यम प्रिंसिपल। ईशावास्यम सब कुछ ईश्वर का है, भगवान का है, कृष्णा का है, हमारा नहीं है। और भगवान पूर्ण है, और भगवान से हम में निकले हैं, हम भी पूर्ण है। अब हम ये देखते हैं जो सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है, वो भगवान को ही हम अपने लाइफ में कैसे ला सकते हैं। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आती है कि ये शायद हमने पहले डिस्कस करी थी स्टोरी, कि एक राजा, उनके जो छोटे छोटे से विलेजेस थे, वो विलेजेस में जाया करते थे। तो एक विलेज के अंदर राजा गए, और जब राजा आते हैं, जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी स्कूल के अंदर आए, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आए, तो अक्सर
जो वो इंस्टीट्यूट है, जो प्रिंसिपल है, अगर स्कूल है तो वहाँ के प्रिंसिपल, इंस्टीट्यूट चेयरमैन जो भी होंगे, वो प्राइम मिनिस्टर एज अ गेस्ट आए हैं तो उनको कुछ गिफ्ट देंगे। तो ऐसे ही जब ये किंग, इवन दो किंग के पास सब कुछ है और किंग के पास सबसे ज्यादा है, और जो विलेजेस हैं वो भी किंग के ही हैं, लेकिन किंग फिर भी विलेजेस में जाते थे तो विलेज के लोग कुछ कृष्ण को, कुछ किंग को, राजा को ऑफर किया करते थे। तो वहां पे एक बूढ़ी माँ थी जो कुछ ऑफर करना चाहती थी, तो लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। तो राजा के एक मंत्री को पता लगा, तो उन्होंने कहा आप आए। तो वो उनके पास से लेके गई कि ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं। तो राजा ने कहा हाँ जी आप। तो उन्होंने, माँ ने कहा कि मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, कि मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है आपको, लेकिन मैं एक माँ हूँ, मैं माँ के रूप में आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। तो वो राजा इतने मूव हुए, तो उन्होंने कहा कि आप माँ मेरे साथ चलें। तो वो बूढ़ी माँ अकेली थी, तो उनको लेके गए अपने महल में, अपनी माँ का दर्जा दिया। अब सिर्फ राजा ने वो बूढ़ी माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया, तो पूरे राज्य में वो माँ राजमाता बन गई। तो अगर किसी ने कुछ राजा को दिया होता या राजा से मांगा होता, तो अगर किसी ने राजा से मांगा होता तो राजा ने कोई एक चीज दे दी होती। लेकिन क्योंकि ये माँ ने वो राजा को सर्व करने की कोशिश करी कि मैं आपको सर्व करना चाहती हूँ, और मैं उसके अंदर कोई माँ का ऐसा नहीं था कि माँ को कुछ चाहिए था, क्योंकि कुछ चाहिए होता तो वैसे ही वो चीज मांग सकती थी, राजा तो वहां देने ही आते हैं। लेकिन क्योंकि वो सर्व करना चाहती थी, तो वो राजा ने वो माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया। इस वजह से पूरे राज्य में राजा का जो भी था, अब वो इनडायरेक्टली वो माँ का हो गया। तो हम क्या समझ सकते हैं कि इन्वोकेशन मंत्र में कृष्णा पूर्ण है, कृष्णा से हम निकले हैं, हम भी पूर्ण है। मंत्रा 1 में ईशावास्यम, सब कुछ कृष्णा का ही है क्योंकि कृष्णा से ही निकला है, और हम भी कृष्णा से ही निकले हैं। तो अगर हमारा कुछ नहीं है, हमारा अपना लिमिटेड कोटा है, लेकिन भगवान का सब कुछ है। अगर हम सब कुछ जो भगवान का है वो भगवान को ही अपनी लाइफ में ले आए, तो एक तरीके से हमको सब कुछ ही मिल गया, क्योंकि वो जो सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है वो भगवान को ही हम अपनी लाइफ के अंदर ले आए। So in this analogy we understand that everything which belonged to the king now belongs to the mother, because the king has given the status of his own mother to that old lady. And because of that, everything which belongs to king, which is everything in that kingdom, now belongs to the mother. Similarly, the Krishna is complete, and if we will bring that Krishna who is complete and everything belongs to him, if we bring that Krishna into our life, then we will never have anything lacking in our life. And Krishna says that in Bhagavad Gita as well, that I take care of those things which are worth taking care of, and I provide those things which are missing from a devotee's life. So both things, that I protect what needs protection, and so when we say needs protection, that basically means the spiritual thing, not the material thing. So it's not, so Arjun and Krishna, they were together, and even after Arjun accepted Krishna as the teacher, Arjun realized Krishna is the supreme personality of Godhead, Krishna is the Lord. Even after that, Arjun had to lose his son Abhimanyu and rest of his relatives. But spirituality, that was not lost for Arjun. So what's need protection? Material body, our relatives' material bodies, our friends' material bodies, they will go for sure. But the spiritual realization is the only thing which can stay, and that's the only thing worth protecting. Because when we will take the next birth, then we will start
from wherever we have left in this world spiritually. But materially, doesn't really matter how much we get, we have to start from the zero. So what is worth protecting is spiritual, not material. तो हम इस वर्ष से यही समझ सकते हैं कि भगवान यही कहते हैं कि अगर जो पूर्ण भगवान है, जो ईशावास्यम प्रिंसिपल के हिसाब से भगवान का सब कुछ है, वो भगवान को अगर हम अपने जीवन में ले आए तो हमारा जो लिमिटेड कोटा है वो अनलिमिटेड हो जाता है और हमारी जीवन में हर चीज की पूर्णता हो जाती है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि मैं वो चीज प्रोटेक्ट करता हूँ. भगवत गीता में कहते हैं भगवान कि मैं वो चीज प्रोटेक्ट करता हूँ विच इज वर्थ प्रोटेक्टिंग, जो प्रोटेक्ट करने लायक है, और जो चीज मिसिंग है भक्ति, वो मैं अपने भक्तों को देता हूँ. और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल. जैसे अमरीश महाराज जी हैं जो कि दुर्वासा मुनि उनके ऊपर गुस्सा हो गए थे. दुर्वासा मुनि ने अपने बाल को निकाल के उससे राक्षस क्रिएट करा जो कि दुर्वासा मुनि के गुस्से से बना था और वो अमरीश महाराज को मारना चाहता था, लेकिन भगवान विष्णु का जो चक्र था वो उनको अमरीश महाराज को बचाने के लिए वहां पे आया. हरे कृष्ण. माता जी प्लीज. Yes, Prabhuji, if you remember, can you tell me which is that verse in Bhagavad Gita, what you just explained? If you remember, otherwise later on. Yes. It doesn't recall at the moment, Mataji. This is the English translation, but I will find out for you in Sanskrit. Okay, all right, sure. It is one of those mantras which we recite, and it will come back. It will come back. Sure. Okay, all right, okay. If in case anyone else remembers, I know Bhagwati Mataji might be very good as well. Mataji knows many verses, I guess. I'm guessing, but I will check because I have some of the verses. But I will find out, Mataji. Okay, Prabhuji. Yes, Hare Krishna. It's a very nice verse, Mataji. Thank you so much. And this is what I was saying, that in our Vedas, Puranas, Upanishads, many of the verses, they cross-reference back to where Bhagavad Gita is. And that's the reason we realize that Bhagavad Gita is the essence of the whole Vedanta, whole Vedas, Upanishad. And if we just have that, that will do for us. But the reason we are reading all this, so when we will go back and we will reread Srimad Bhagavad Gita, then we will understand true meaning behind the verses. Right. Very nice. So this is a mantra, and we will see the Sanskrit mantra as well. But what Srila Prabhupada ji explained in the purport of Shri Īśopaniṣad for this verse is saying that there is a problem, and so this chart we see now, kind of flow chart, this is done by Radhesham Prabhuji. So I have borrowed from his presentation, and it says, so this is what Srila Prabhupada ji explained in his purpose, and we will see what NKY, Nishkam Karma Yoga is. There are three kind of yogas explained in chapter 3 of Bhagavad Gita, and we will see that. But the very first thing explains the problem. What is the problem, why there is a problem, and how this problem continues. So that's first section we will see. Then what is a solution, and when is the solution possible? Then what is actually the solution and how it works, and also why it works, but mainly how this solution works. So a lot of times we take the medicine and we don't know how this medicine works. So because we don't have that, so maybe because we have the faith and trust in our parents, faith and trust in the doctor, or sometimes just the faith and trust in the name of the medicine. And because of that, we just remember, we say, oh yes, this is what I had it last time. Based on my own experience, this medicine will work. But if somebody will ask why, you will say, well, I don't know. Based on my experience, it works, but I don't know how. But if we understand how that works medically, then, or if we take another example of mechanically in the car or something, then
then not only that we can understand it very nicely, we have much more faith in it because now we understand the concept, how it works. We can also make somebody else understand. So that's where how it works, how the solution works. And we will see in detail what the problem and which solution we have mentioned. Not only that, how it works, then the benefits of that solution is also there. And now sometimes we say that in spirituality, most of the things are very theoretical. So here we will see that not only that it's the solution is there and the benefit of solutions there, but how practically we can apply this solution. And so that's not there in this, but NOD, nectar of devotion, is where 64 elements of bhakti are given. So we need to do these 64 things, and there are main 5 also. But we need to do, if we do all these 64, we will reach to the level of, so there are 9 different levels or stages in devotion, the path of devotion, and the topmost, they're the last two, bhakti and prema. So we say the whole motive, of course, Krishna consciousness. So the whole motive is Krishna prema, love for the God. So what a mother would like from a child, mother will only like that the child will respect me, child will love me unconditionally, not because the mother has property on her name, or maybe because she has a lot of jewelry inside. No, just because the child loves mother, right? And that's what we should have. And when we will realize we have Krishna prema, it's not only that Krishna, the God, is there, because we understand what we have just seen and understood that everything belongs to Krishna. So when we love Krishna, we will love everything which belongs to Krishna. And it happens. So if we love our brother and sisters, we love their kids also. And for some reason, if we fight with our brother and sister, most of the time we distance ourselves from their children also. So if we love Krishna, not only that we will love Krishna, we will love everyone else in the world, because we know Krishna is there in the heart of everyone in the form of Paramatma. So imagine such a beautiful place it could be when everybody loves everyone else. And Bhakti Yoga could do that. And of course, if you see the example of ISKCON temples, we can understand, because in an ISKCON temple, people are from all over the place. And wherever you go, you always see, so I have personally experienced it. I was in Midlands, I was in Sheffield, next to Manchester. So Manchester, Birmingham, they have the temples there. Then I went to Abu Dhabi, Dubai, Muscat. Then on the way back, I was in Paris. Then I came back here in London. And even in London, there's a North London temple, South London temple, and there are a few, like there is another association in Reading. But wherever you go, so I have visited Manchester and Birmingham as well while living here in London. So we go in the bus. And in the bus, whenever you meet devotees, it's like they're your family members. When you go there, you're sitting, you're singing, dancing, eating. The topics you are discussing, they all belong to Krishna. And it feels like they are your family members. And you will feel so nice. So I think it's so easy. We can understand that if we understand this mantra, how Nishkam Karma Yoga works, and if everyone follows that, it could be such a beautiful place to live. And that's why we say that the devotees are always happy. So of course, the bodily pain could be there, but the suffering is not there. So the suffering that why this happened to me, or this has happened to me, or that didn't happen to me, that's not there. Devotees do the endeavor, but they don't get attached to it. So हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन काम कैसे करता है, सॉल्यूशन का बेनिफिट क्या है. लेकिन नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, जो ग्रंथ रूपा गोस्वामी जी ने लिखा है, उसके अंदर बहुत अच्छे से 64 डिफरेंट क्वालिटीज के अंदर किस तरीके से एक भक्त भक्ति के अंदर आगे
बढ़ सकता है। और रूप गोस्वामी जी षड गोस्वामी में से 6 गोस्वामी जी में से मुख्य गोस्वामी हैं। वृंदावन की जो रीस्टैब्लिशमेंट हुई उन्होंने करी, उसके अंदर जो गोविंद जी का मंदिर है वो रूप गोस्वामी जी ने, उनकी बेटी और उनकी पूरी फैमिली, उनके भाई सनातन गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी ने, उन्होंने भक्ति के बारे में बहुत कुछ बताया। तो यहाँ पे जो वर्स है ये सीधा वहां से मैच करता है। तो अभी हम आगे चलते हैं और हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, फिर सॉल्यूशन का डिस्कस करेंगे। और अलग अलग तरीके की प्रेजेंटेशंस हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो है जो हमने मंत्रा 1 में कहा कि हमारा लिमिटेड कोटा है, लेकिन अगर हम कोटे से बाहर निकल के कोशिश करेंगे तो दिक्कत है। वही मंत्र 2 में कैसे समझाया हुआ है, कर्म बंधन, बॉन्डेज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस, बर्थ एंड डेथ। अब ये कर्म बंधन क्या होता है? हमारे जो कर्म है वो हमको बांध देते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि हम अपने कर्मों से जो बंधन है उनसे निकल भी सकते हैं, और जो बंधन है कर्मों की वजह से वो बंधन और टाइट भी हो सकते हैं। तो कर्म है, कर्म हमें करने ही है। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं कि कर्म भी किए बिना कोई नहीं रह सकता, बल्कि भगवान ये भी कहते हैं कि मैं खुद भी कर्म करता हूं, ताकि कोई मेरा एग्जाम्पल ना ले ले कि देखो भगवान आए थे, भगवान ने तो कर्म किए नहीं, हम भगवान के डिवोटी हैं, हमें भी कर्म नहीं करने चाहिए। तो भगवान कहते हैं कोई कोई भ्रमित ना हो जाए, इसलिए मैं आता हूं तो मैं भी मनुष्यों की तरह कर्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग मेरे को भी देखें और कुछ सीखें। और जो लोग सेल्फ रियलाइज होते हैं, अर्जुन पूछते हैं वो क्या करते हैं, तो भगवान यही कहते हैं जो सेल्फ रियलाइज भी हो जाते हैं, जो लिबरेटेड सोल भी हो जाते हैं, वो लोग भी एग्जाम्पलरी वर्क करते हैं। वो ऐसे कर्म करते हैं कि लोग उनको देख के अपना रोल मॉडल समझे और उनकी तरह कर्म करें। तो कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा कि भक्त कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हाथ पे हाथ दे के बैठ जाएगा कि मेरे कोटे में जो है मुझे मिल जाएगा, नहीं। भक्त हमेशा कर्म में लगा रहेगा, लेकिन फल की इच्छा नहीं करेगा। जैसे माता जी ने कहा, जो भगवत गीता के अंदर वर्ष आता है कि फल की इच्छा नहीं करनी। तो कर्म बंधन हमें कैसे बांधता है? कर्म बंधन हमको ऐसे बांध सकता है कि हमने सोचा हम ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, हम दूसरों से अच्छे हैं, तो कर्म बंधन हमको बांध देगा कि अब हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हम अगर पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा के लिए कर रहे हैं, वो कर्म बंधन ने हमें बांध दिया। हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, काम ब्राह्मणों के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कर्म बंधन में बनते चले जा रहे हैं। अगर कोई क्षत्रिय है, वो दूसरों को बचा रहा है, लेकिन बचाते वक्त वो ये मान रहा है कि मैंने बचाया है, देखो मैं कितना बड़ा किंग हूं कि मैंने बचाया है। जैसे कि अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर को इस चीज का अपने ऊपर घमंड था कि मैंने एक छोटी सी एज के अंदर कितनी पृथ्वी जीत ली है। और काफी एग्जाम्पल आते हैं, ग्रीक फिलोसफर भी थे, और जो जब वो भारतवर्ष में आए तो भारतवर्ष के भी जो संत थे, उनसे जो अलेक्जेंडर की बात होती है, तो वो अलेक्जेंडर को जो शिक्षा देते हैं उसके बारे में हम सुनते हैं, तो पता लगता है उस शिक्षा के बाद अलेक्जेंडर के ऊपर फर्क पड़ना शुरू होता है। अदरवाइज पहले वो बहुत सेल्फ ईगो थे, और वो एक क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय युधिष्ठिर महाराज भी थे, अर्जुन भी थे, और वो जब लड़ते थे तो वो इस चीज के लिए लड़ते थे कि मैं किंग हूं तो मैं सर्वेंट हूं, मेरे को भगवान ने ये पोजीशन दी है कि मैं इस सबको प्रोटेक्ट करूं, जो भी मेरे लिए दी है। right? ऐसे बहुत सारे थे, उत्तानपाद थे, जो प्रियव्रत थे, ये सारे राजा थे जो इस तरीके से राज्य करते थे कि वो अपने आप को राजा का राजा थे, लेकिन वो प्रजा के सेवक अपने आप को मानते थे। तो फिर कर्म बंधन में वो नहीं बनते थे। तो ये कर्म बंधन जो हमें बांध देता है, कोई भी चीज को अगर हम देखें, अगर हम जो भी काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए करें, भगवान ने हमको शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, इस वजह से करें, then कर्म बंधन will not be a bondage. Bandhan is the bondage. Karma is the action. So based on our actions, we can get liberated, and we can get, it says, the bondage. That bondage is going to tie us tighter and tighter in material world. Now, why? It says, because we are not acting according to the prescribed duties. What are prescribed duties? As we were discussing, prescribed duties are, so if we are Brahmin, we need to
study scriptures, we need to teach scriptures, but we should always think, and anybody could do it. This, when we say Brahmin, this is not based on the birth. This is based on the duties. So somebody whose father is a Shudra. Shudra is like who is in the business of, well, I say business, who is in the service, and because he or she is in the service, so the parents are Shudra, but the son will say that I love studying Vedas, and I will learn Vedas and I will teach Veda, which means I will spread the word around, and I'm not going to charge anything for it, and I don't want to study Vedas to earn money out of it, then that person is Brahmin. Even though parents are still Shudras, which is not a bad thing at all, because this is based on the karma, not based on the birth. So if we act according to our prescribed duties, then yes, we are going to get liberated. But if we will not work towards so this is where the 4 caste systems come: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Karma Bandhan. We need to act, but we should always remember whatever we need to act is based on, we should always be Krishna conscious. It should be based on the Shastric evidences, not feeling good about ourselves, not feeling, or what we say, try to pat our self-ego. Oh, I have managed to do it. Many business people, they say they're Vaishyas, and they say, I have managed to do it. But we have seen a lot of businesses, they are, I remember, I think in 2008, 2009, when the recession happened, Lehman Brothers, they were the great examples. And there are many other examples as well, like that. Ajay ji, please. Its prescribed duties are a Nishkam karma. Yes. Yes. Thank you. The prescribed duties are Nishkam karma. And we will see further as well, when we will see 3 different types of karmas, and we will see so which karma we are supposed to do. And so the prescribed duties will even get more clearer here. Thank you, Ajay ji. Thank you for raising it. And transgressing. So transgressing law of material nature. So again, transgressing is bypassing. So we should not bypass whatever is there. We are supposed to do, we should do it. We should not try to do something which we are not supposed to do. Right? And there are many examples like this. For example, if we are not police people, we should not go act like a police outside. No, we are not police. We can inform the police. Police can come and act as they are supposed to act, but we should be careful that if it's not us, it's not our duty, we should not get intervened there. Whoever it belongs to, that person should do. And how? So this problem, what the problem is, karma bandhan. Why this happens? Because we don't act according to the prescribed duties. Most of the time, we don't even know prescribed duties. We know prescribed duties, we follow prescribed duties, we are good. And we will see the karmas. And then how? So how is sense gratification? We just get into different kind of, we have seen socialism, communism, and that's the meanings of isms here. There are so many of their people also, well, we are Indians or we are white, black, and people just get into that narrow categorization and spend rest of their life on that. And it's a sense gratification. People just, because they just do the actions to gratify their senses, and they spend rest of their time enjoying it. So that's how the problem comes. So what is the problem? Why is the problem? How this problem gets bigger and bigger and bigger and bigger. It's not going to help us. Will never ever help us. Now, what is the solution? तो हमने जिस तरीके से देखा कि प्रॉब्लम क्या है कि हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं. क्यों बंधते हैं? क्योंकि हमको जो काम करना चाहिए हम वो नहीं करते, हम काम वैसे नहीं करते. और क्यों हो? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. अपने कोई चोरी क्यों करता है? भाई सबको मालूम है चोरी करना बुरी बात है. फिर भी चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि चोरी करने से कम मेहनत से आपको बहुत सारा धन मिल जाता है. तो वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपनी इंद्रियों के भोग के लिए हम गलत काम करते हैं. हमें मालूम है हमारे सोसाइटी में प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है. प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बहुत सिंपल है कि अगर आपको पैसे चाहिए आप जॉब करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे. लेकिन हम उसके अकॉर्डिंग नहीं काम करके गलत करेंगे काम. तो कैसे करेंगे? हम चोरी करेंगे, कोई और गलत काम करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए सोसाइटी में हम रहते हैं.
जिस भी सोसाइटी में रहेंगे वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मिडल ईस्ट के अंदर अगर आप हैं तो आप 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं से मिडल ईस्ट से कोई इंग्लैंड में आ जाए और कहे भाई मैं तो 4 शादी कर सकता हूँ, फिर आप कर सकते हैं, लेकिन इस लैंड पे नहीं कर सकते आप। इसी तरीके से हम जहाँ पर हैं वहाँ के हमको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये हम यूजुअली रूल्स रेगुलेशंस को ब्रेक करते हैं तो मकसद एक ही होता है कि हम अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं, इसलिए रेगुलेशंस फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम की हमने बात करी। अगर हम आगे चले और हम सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन क्या है? तो when, what, and how it works. Very similar to what we have seen in the problem. In the problem, we saw what, why, and how. So very similar. So it says when. It could be what. It's. So we talked about karma bandhan. Now we are saying that we could, how the karma, how the actions could liberate us from the bondage. And it says we can only do in human life. We have done the series on Goloka chart. In Goloka chart, we have seen that 3 different sections of the planets. And one is the heavenly planets, and then in the middle Earth, and the lower planetary system. And all together, we have 14 planets. And we are in the middle. So 6th or 7th, depends whether you count from the top or count from the bottom. So from the top we are 6th, 3, 4, 5. We are 6th. From the bottom we are 7th. Earth, Bhumandal, where we call it. And this is the only place, it says, even though this place is Dukhale, the unhappiness will be there, the sorrow will be there, as long as we live in the material, we live with the consciousness of material body, right? But if we will live with Īśopaniṣad principle, that everything belongs to Krishna, we are the servants of Krishna. However, because Krishna is complete, we are also complete spiritually. Then we will do the actions which, as Ajay reminded us, that is Nishkama Karma Yoga. So we will see what kind of karma that is in detail. But that's only possible in human life. And the reason it says when only when we have the human body, not when we have the animal body, not when we have the tree bodies, not when we have the body, divine body in heaven. No, only when we have a body like a human body on planet Earth, which luckily and fortunate enough we have it now, right? So now is the time when this solution will work. Now what is the solution? Working to gradually realize the authority of personality of God, which means mantra 1 says Īśopaniṣad idam, that everything belongs to Krishna. But very soon when we realize it, there is one thing we have heard, one thing we have realized, right? So we see the fire and somebody will say, don't touch the fire, fire is hot. Somebody else will come and we will say, oh, don't touch the fire, fire is hot. And the person will ask, have you touched it? No, I haven't touched it, but somebody else told me. So that's based on what we have heard, which could be true, but it's not our personal realization. So then the person will go away, and that person has put a doubt in our mind. We might think, well, the person is right, actually. I have not touched myself, so I can't be 100% sure. Let's go and try. And if I will try and if it will burn my hand, then I will know. Well, definitely I know it now that it burns. That's what we call self-realization. So the solution is when gradually, so when we chant, when whatever happens in our life, we try to contemplate, we live in the association of devotees, we speak to each other, we say how we think that this is something good and Krishna has done it. And then we get the solution, we discuss a lot of things with each other. Then slowly, gradually we understand that that's so true. Everything happens for Krishna. Even though superficially, if we see COVID has killed so many people, but COVID didn't come without Krishna's permission. And COVID didn't kill like anyone. COVID killed specific people.
maybe COVID delivered the results of the bad karmas of those people. I'm not saying that's the only reason, but maybe that's the reason. That could be one of those reasons. Now, this is a nasty thing to say if somebody has lost a family member, but sooner or later, each one of us is going to lose our body, because this is material and this is going to go down anyways, based on our own karma. And we know, and sometimes even we don't remember our previous karmas. So we should think of that. But gradually, and we will see in Shri Īśopaniṣad, gradually we will move towards the solution. And this solution will become very, very, very clear. But how it works, that we attains that knowledge. And once we will attain the knowledge, we will act, right? So we got the knowledge, the fire burns. And then based on that knowledge, we will act. We will not go near to that fire. We will not put our hand, because we know it burns. We will not let anybody else burn the hand as well. So that's how it works. We get the knowledge and we will act on that knowledge. Very simple. We learn Bhagavad Gita, we get the knowledge, we get the wisdom, and then in our day-to-day life, when we make the decisions in our life, we make the decision based on that wisdom. It's as simple as that. So that's where our mantra 2 kind of get introduced. Next section, we will revise it and we will conclude this verse, and we will go into a bit more detail, and we will summarize everything based on what Chaitanya Charan Prabhuji has said, who is famously known as a spiritual scientist, Chaitanya Charan Prabhuji. So with that, thank you so much for your association today. I look forward to see you next Saturday morning, and we will continue where we have left. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Gurudev Maharaj ki jai. Samved Bhakta Vrinda ki jai. Jai Jai Shri Radha.